So let us try to talk about the revision of the next topic in the fluid mechanics beta, that is fluid dynamics. So in this topic, we'll be trying to revise the rate of flow formulas, equation of continuity, Bernoulli's theorem के application, Torsilo's theorem, and efflux velocity के standard results जो भी होते हैं for doing the numericals. ठीक है? तो first one देख लीजिए बेटा, इसके अंदर जो आपने को याद रहना चाहिए. How do you define the rate of flow? Rate of flow बोलो या discharge बोलो, one and the same. So if I'm talking about the rate of flow or a discharge, that is represented by the formula Q is equals to your A into your V. Q is nothing but rate of flow, yani dV by dt. dV by dt. Q is nothing but equal to what beta? Rate of flow. Q is known as of your rate of flow. Rate of flow, that is nothing but volume divided by time. That is nothing but volume divided by your time. ठीक है? Q is equals to your A into your V. ठीक है? और नेक्स्ट वाला जो अपने को याद रखना है इसके अंदर is about your Reynolds number. Reynolds number. Reynolds number represented by your RE. ये भी मैंने क्लास में रेगुलर क्लास में करवाया था. रेनॉल्ड्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं RE इज इक्वल्स टू योर रो इनटू V इनटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय योर कोएफिशिएंट ऑफ योर विस्कोसिटी. ठीक है ना? सो RE इज इक्वल्स टू योर रो इनटू V इनटू योर D. ठीक है? व्हाट इज V हियर बेटा? वेलोसिटी. V इज योर वेलोसिटी, D इज योर डायमीटर. ओके, अगर अपना RE वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, if Reynolds number RE is lesser than or equal to your 2000, then the flow is laminar. Then the flow is laminar. If Reynolds number is greater than 3000, उसको बोलते हैं turbulent. Okay? अगर वो 2000 और 3000 के बीच में लाई करेगा, if R3 Reynolds number lies between 2000 and 3000, उसको बोलते हैं then the flow will be equal to your unstable. ठीक है ना? हाँ, ऐसा वाला भी कराया ना बेटा मैं. Next one is equation of continuity. Equation of continuity. फॉर्मूला याद है बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए? वही रेट ऑफ फ्लो Q is equals to your A into your V. That must be equal to your constant. यानी A1 V1 will be equal to your A2 V2. अगर एरिया दे रखा है तो एरिया लिख लीजिए, वेलोसिटी दे रखा है तो वेलोसिटी लिख लीजिए. दैट विल गिव मी द रिलेशन. रेडियस में लिखना है तो एरिया को पाई इंटू आर स्क्वायर लिख के भी कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है ना? क्लियर? चलो Bernoulli's theorem. Relation याद है सभी को? Sum of your potential energy, kinetic energy, and your pressure energy should always be your constant. That is P plus of your half into rho into your V square plus rho G into your H must be equal to constant. या इसको हम लोग प्रेशर रेट में भी लिख सकते हैं P by rho G plus of your V square by your 2G plus of your H is equals to your constant. ऐसा भी लिख सकते हैं. Pressure rate, velocity head, and potential energy.
Then the next one and very important formula, this one, speed of efflux. Speed of efflux. Any speed with which the water is coming out of the container. मान के चलो अपने पास एक कंटेनर है ऐसा, जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है इस तरह से, and there is a small hole at the bottom. यहाँ पर कहीं पर एक छोटा सा होल दे रखा है मैंने, इस होल में से फ्लो ऑफ लिक्विड बाहर निकलेगा इस तरह से, एंड इट विल फॉल ऑन टू द ग्राउंड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो गिरेगा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया x, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट ऑफ द लिक्विड है मान के चलो h, टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर इज मान के चलो कैपिटल H। तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल H माइनस ऑफ योर स्मॉल h, ठीक है। सो स्पीड ऑफ द लिक्विड विच इज बीन कमिंग आउट, इसको हम लोग एफ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं बेटा, VE। सो आई कैन से दैट द स्पीड of the liquid, the speed of the liquid which is emerging from a hole, which is emerging from a small hole under H, H height के पास, is given by V is equals to under root of your 2g into your h. V is equals to your under root of your 2g into your h, and horizontal distance जो होगा x is equals to your 2 times of your under root of your small h into your capital H minus of your small h, ये हो गया x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस याद रखनी है बेटा, फॉर मैक्सिमम ऑफ योर h, for maximum x, h must be equal to your half of the height of the water in the container, यानी x max will be equal to your capital H के बराबर होगी। डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन, clear? And next one is very important formula, that is time of your emptying a tank. Time of emptying a tank. Time of emptying a tank. Formula is, ये derive किया था मैंने क्लास में, T is equals to your capital A divided by small a under root of your 2 divided by G into your root of your H1 minus root of your H2. Very important relation. Capital A is your area of your container, small a is your area of the orifice, and small h is nothing but height, and H2 is nothing but another height to which it is been dropping. And H1 से H2 drop करने के लिए कितना time लगेगा? So time formula will be equal to your how much will be? T is equals to your capital A divided by small a under root of your 2 by G under root of your H1 divided H1 minus of your H2. For maximum conditions ये वाला formula है। कैपिटल ए इज योर एरिया ऑफ योर कंटेनर बेटा, यानी अगर ये कंटेनर है ना बेटा, तो इसका जो एरिया होता है इसको हम लोग कैपिटल ए ले रहे हैं। स्मॉल ए जो होता है ना, एरिया ऑफ योर ऑरिफिस होता है, ठीक है ना। चल, क्लियर एवरीवन? Small a is area of the orifice beta.
स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ योर ऑरिफिस. ऑरिफिस मतलब स्मॉल एरिया ऑफ द कंटेनर, होल ऑफ द कंटेनर. होल ऑफ द कंटेनर इज कैपिटल ए, स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ द होल, स्मॉल होल. क्लियर? चलो ये वाला देखिए. Efflux velocity when there are two liquids. When there are two liquids in the container. Efflux velocity when there are two liquids in the container. मान के चलो अपना एक कंटेनर है इस तरह से. इस कंटेनर के अंदर दो लिक्विड्स है बेटा. ठीक है, एक लिक्विड यहां पर इस तरह से और दोनों इमिसिबल लिक्विड्स है. तो ये वाला और एक लिक्विड. ठीक है, और इन लोगों की डेंसिटी देखो. इसकी डेंसिटी ρ1 है और इसकी डेंसिटी ρ2 है. इसका हाइट मान के चलो h1 है और इसका हाइट मान के चलो h2 है. ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा होल है through which the liquid is been coming out. Okay, so यहाँ से velocity of liquid is been coming out with certain efflux velocity. तो यहाँ पर बेनोलिस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे देखो बेटा. half of your this will be equal to ρ1 VE square must be equal to ρ1 G into your H1 plus of your ρ2 into G into your H2. क्योंकि अपर पार्ट इज लार्जर कंटेनर तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो नेग्लिजिबल. तो VE कैसे लिख सकता हूँ देखो बेटा मैं. VE वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा. VE स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर, ये 2G इधर चले जाएगा. इसमें से देखो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर. तो ये हो गया मेरे पास दिस वन इज ρ1 H1 प्लस ऑफ योर ρ2 H2 इंटू योर, ये हो गया G कॉमन और यहाँ पर 2 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, isn't it? तो ये हो गया ρ1 इंटू VE स्क्वायर. तो VE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2G डिवाइडेड बाई ये हो गया ρ1 इंटू ρ1 H1 प्लस ρ2 H2. तो VE की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो. तो VE is equals to velocity of efflux is equals to under root of your 2G divided by ρ1 into ρ1 H1 plus ρ2 into your H2. तो ये हो गया इसके velocity. When two liquids दे रहे हैं basically, तो how do you simplify this? ठीक है, आया समझ में सभी को? देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लोग जब लिक्विड की वेलोसिटी लगा रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट ऑल टेकन एज ऑफ योर 0. ठीक है, ये लार्जर एरिया ऑफ कंटेनर है ना बेटा, इसीलिए. क्लियर है? बेटा चलो, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेटा जो आप लोग को बाय हार्ट होना जरूरी है, दैट इज योर लिफ्ट फोर्स ऑन एरोप्लेन्स. जिसको हम लोग डायनामिक लिफ्ट भी बोलते हैं.
ठीक है ना, ये वाला शेप ऐसा कुछ रहेगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटीज रहेंगे, यहाँ पर एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 और लोअर पार्ट के ऊपर यहाँ पर वेलोसिटी हो गई v2, ये हो गया ये, और हाइट ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू योर h। ठीक है बेटा, तो डायनामिक लिफ्ट का फॉर्मूला बताइए किसी को याद रहे तो। Force will be equal to your F is equals to your pressure difference, that is P2 minus P1 into area। ठीक है ना, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, F is equals to your half into density of your air into your V1 square minus V2 square into your area। ठीक है, V1 की वेलोसिटी V1 विल बी ग्रेटर देन V2, तो यहाँ पर प्रेशर P1 होगा और यहाँ पर प्रेशर P2 होगा। अगर V1 ग्रेटर होगा और V2 से, तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ओके, इसीलिए इसके वजह से वो फोर्स, नीचे प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से इट विल बी मूविंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, next one and one more very important application, that is about your Venturi meter। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ योर वेंचुरी मीटर। डायग्राम याद होगा आपको, मैं रफली फिर भी एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर डायग्राम ऐसा कुछ होगा छोटा सा, ठीक है, इसमें लिक्विड यहाँ तक होगा, इसमें लिक्विड यहाँ तक होगा, और इन दोनों के बीच में वाली जो हाइट है, ये हो गया हाइट h। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, तो यहाँ पर से फ्लो जा रहा है, दैट इज योर रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड इज Q इज इक्वल्स टू योर A1 इंटू योर A2, दोनों का एरिया मल्टीप्लाई करो into under root of your 2 times of your P1 minus of your P2 divided by density of liquid into your A1 square minus of your A2 square। ये पूरा डेरिवेशन मैं ऑलरेडी क्लास में कर चुका हूँ, उसको आप एक बार देख लीजिए। या Q को हम लोग वेलोसिटी में भी लिख सकते हैं, Q is equals to your A1 A2 under root of your 2G into your H। क्या होता है देखो बेटा, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द टू लिम्स divided by under root of your, ये हो गया मेरे पास A1 square minus of your A2 square। ठीक है ना, so this is your standard formulas of your Venturi meter in terms of your pressure and in terms of your height। क्लियर है बेटा? यहाँ पर h क्या होता है बेटा, h value will be equal to your V2 square minus of V1 square divided by your 2G। This will be your height h। okay? और एक वाला होता है पिटेड ट्यूब, ये भी करवाया था मैंने, बस फॉर्मूला याद रख लो फिलहाल के लिए। पिटेड ट्यूब यानी the instrument which is used to measure the flow of your rivers। Q is equals to A into V से अपन को क्या मिलेगा, A into under root of your 2G into your H। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला ऑफ योर पिटेड ट्यूब। डायग्राम याद ही होगा, बेसिकली एक एल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा कुछ, और इसको हम लोग वाटर में रखते हैं बेसिकली। ओके,
सो h इज योर हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, यानी यहाँ पर एक छोटा सा ट्यूब रखते हैं ऐसा जिसमें वाटर रेज होगा। तो यहाँ पर जो वाटर रेज हुआ एंड इसमें ये जो वाटर रेज हुआ बेसिकली, तो इन दोनों के बीच का जो हाइट होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू h। ठीक है, क्लियर? pitted tube, the instrument which is used to measure the river velocities or river flows को हम लोग क्या बोलते हैं? pitted tubes। ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा, the velocities on lower and upper surface of an aeroplane wing are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. If area of the wing is 10 meters square, find lift force. Find your lift force on the aeroplane. Density of the air, density of your air is 1.2 kg per meter cube। चलो बताओ जल्दी से, मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज द फॉर्मूला? डायनामिक लिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, P is equal, F is equals to P2 minus P1 into area, या F is equals to half density of your air into V1 square minus V2 square into your area of cross section। ठीक है ना, तो फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर सीधा सीधा। पढ़ करके बताइए। That is equals to your F is equals to your half density of your air into V1 square minus V2 square into area of cross section। जल्दी
हाँ बेटा, आ गया किसी को? 1800 न्यूटन, वेरी गुड। 1800 न्यूटन, वेरी गुड। और इस बेटा, चलो, हाफ डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा? हाफ डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 into v1, वेलोसिटी इज हाउ मच फॉर योर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, यानी जो हाइयर वेलोसिटी रहती है उसको हम लोग v1 लेना है, यानी 20 स्क्वायर माइनस अनदर वन इज नथिंग बट ऑफ योर 10 होल स्क्वायर इनटू एरिया कितना है बेटा 10, ठीक है ना? सो दैट विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 1800 न्यूटन, वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन देखिए बेटा, द वाटर इज फ्लोइंग इन ए पाइप। कल और परसों के क्लास में यही टॉपिक पे खाली प्रॉब्लम्स रिवीजन होंगे बेटा, थियरी तो मैंने ऑलमोस्ट और पूरे फॉर्मलेस रिवीजन करा दिया। कल फ्राइडे और सैटरडे के क्लास में इसी टॉपिक पे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे, होगा तो सैटरडे के दिन एक बार वेव्स के ऊपर प्रॉब्लम्स करा लेते हैं थोड़े। चले करके बताइए। वैल्यू निकाल के बताइए। The water is flowing in a pipe as shown in the figure. What is the value of the H in the pressure head from the data given? इसका भी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H का देखो निकालने का फॉर्मूला, H is equals to your V2 square minus V1 square divided by 2G। करिए, H is equals to your V2 square minus V1 square divided by 2G। V2 is higher velocity, that is 20 square minus of your 10 square divided by 2, G की वैल्यू हो गई 10। कितना आ रहा देखिए, वेरी गुड, 15 मीटर्स। ठीक है बेटा।
ये क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा, दिख रहा है आप लोगों को? Are you able to see this question? मैं लिख देता हूँ. A log of wood of mass 120 kg floats in water. The weight that can be put on the raft to make it just sink should be density of your wood will be equal to 600 kg per meter. चलो करके बताइए. लॉग ऑफ वुड ऑफ मास 120 kg, तो मान के चलो ये मेरे पास एक लॉग है. लॉग मतलब क्या? वुड. और ये फ्लोट कर रहा है इन द वाटर. ठीक है. मास कितना? 120. द वेट दैट शुड बी पुट ऑन द रैफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक. ओके, अब मैं इसके ऊपर कितना वेट रखूं सो दैट ये पूरा ऐसा सिंक हो जाएगा. इस पे कितना वेट मुझे रखना पड़ेगा? चलो मास ऑफ है तो ये सिंक होगा. ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो पहले डेंसिटी ऑफ द वुड विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ द वुड कितना हो गया? मास बाय डेंसिटी. मास कितना है मेरे पास? 120. डेंसिटी कितना है मेरे पास? 600. यानी ये हो गया मेरे पास कितना? ये वाला चले गया. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? 6 1 जा 6 2 जा यानी 0.2 मीटर. Isn't it? So volume of the water will be equal to how much for me? 0.2. अब यहाँ पर ये जब सिंक होगा तो इस पे वेट क्या क्या हो जाएगा बेटा, एक बार बताओ. 120 kg तो ये था ऑलरेडी, तो ये भी 120 kg यहाँ पर, और स्मॉल m इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. Isn't it? और इस पे एक बायन फोर्स लगेगा ऊपर. F buoyancy will be equal to density of liquid, volume of the body into your gravity. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 120 plus m into your g must be equal to density of liquid, volume of your body into your acceleration due to gravity. ये वाला चले गया. So the weight that should be put on the raft pull rod. So this one is 120 plus of your m is equals to density of your liquid. Density of liquid will be equal to how much better? Density of water. Density of liquid will be equal to यहाँ पर density of water वो कितना होता है? 10 to the power of 3 kg per meter cube. तो density of water हो गया 3 into volume कितना है बेटा मेरे पास? 0.2. ठीक है ना? तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 पावर 3 into 2 divided by 10. तो ये वाला और इसमें से एक चले गए तो 2, यानी ये हो गया 200. ये हो गया 120 प्लस ऑफ योर m. तो m की वैल्यू कितनी होनी है बेटा? m इज इक्वल्स टू योर, ये बन जाएगा 200 माइनस 120. सो 200 माइनस 120 विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? 80 kg. ये हो गया मेरे पास 80 kg. आ गया सभी को? वेरी गुड. ऐसे वाले क्वेश्चंस रेगुलर आते रहते हैं बेटा. ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोग को थोड़ा बायोंसी का कॉन्सेप्ट वगैरह लगा के कर लो ना, आराम से निकल जाता है किसी को. ठीक है.
सर हाउ यू टुक 120 प्लस एम, यहाँ पर इसके ऊपर वेट लगा हुआ है ना बेटा, यहाँ पर देखो ये वेट जो है ना एम है, एम नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, वेट ऑफ द बॉडी एम इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इसके नीचे 120 kg है, तो ये 120 नीचे है जी, और ये एम ऑल्सो जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो टोटल मिला के कितना हो गया 120 जी प्लस एम जी, दैट विल बी इक्वल टू 120 प्लस एम इंटू जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू बायोंसी फोर्स, ये लिया मैंने बस, डन। ठीक है, कल के क्लास में इस पे प्रॉब्लम्स करके देन विल स्टार्ट विद योर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी कौन सा भी टॉपिक हुआ था वो कर लेंगे, ठीक है, टेक केयर बेटा, जज़ाकल्लाह।